Assalamu alaikum dear students. Today the day is Friday and the date is 7th of August. We are starting again lesson number 4 rocks, and this time the topic is type of rocks, and we had discussed two more rocks in the previous lesson. Now this is the time to discuss metamorphic rocks. The objective of this topic is describe the metamorphic rocks and their types. What are metamorphic rocks? The rocks formed on the surface of the earth are weathered and eroded, while the rocks which are formed or buried under the surface of the earth are changed. These changed rocks are called metamorphic rocks. So on this behalf, there are two main reasons for this change. First reason is first reason is temperature and the second one is pressure. Temperature के साथ temperature is definitely found in the interior of the earth. तो interior of the earth जब वहाँ पर magma the molten material magma, इसकी वजह से जो changes आते हैं metamorphic rocks में मैग्मा की वजह से चेंजेस आते हैं, एंड देन प्रेशर के जब ऊपर से नीचे की तरफ प्रेशर जाता है तो उस वजह से रॉक्स के अंदर जो चेंज आता है, तो ड्यू टू दैट चेंज मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फॉर्म. सो ऑन द बेसिस ऑफ दीज रीजंस देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स. First type is rocks formed by thermal metamorphism, and second one is rocks formed by regional metamorphism. So next we will see that rocks formed by thermal metamorphism, how the rocks are formed by the thermal metamorphism. Thermal बेटे कोयले को बोलते हैं, right? The molten matter moves beneath the earth. अब इसको एग्जाम्पल हम कैसे लेंगे? क्या आप लोगों ने कभी ईंटें बनते देखा? हमारे स्कूल के पास भी एक ईंटों का भट्टा मौजूद है, और इट विल बी इन योर ओन एक्सपीरियंस. यू मस्ट हैव सीन मेकिंग ऑफ ब्रिक्स एनी टाइम इन योर लाइफ. ब्रिक्स आर मेड बाय क्ले देन प्लेस्ड इन द किल्न अंडर फायर. मट्टी से बनाई जाती हैं और उसके बाद इनको भट्टी में रख के इनको पकाया जाता है. टू चेंजेस अकर इन द ब्रिक्स बाय दिस प्रोसेस. कौन कौन से चेंजेस आते हैं? द कलर ऑफ द ब्रिक्स चेंज एंड टाइनी सेडिमेंट्स बिगिन टू शाइन. एकदम आपको जब पकी हुई ईंट नजर आती है, दैट हैज अ डिफरेंट कलर. द ब्रिक्स गेट हार्ड एंड कम्पैक्ट. क्ले यूटेंसिल्स आर मेड इन द सेम वे. So same changes occurs in the rocks by heat. The molten matter magma, it moves beneath the earth. When it moves inside the earth, it passes near or over a rock. चेंजेस इट्स कंपोजिशन, यानी इसकी कंडीशन या इसकी हालत को चेंज कर देता है, एंड स्ट्रक्चर, और इसकी साख्त को, इसकी बनावट, इसकी मेकिंग, इसकी शक्ल को चेंज कर देता है, एंड अ न्यू रॉक इज फॉर्म. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थर्मल मेटामॉर्फिज्म. अंडरस्टूड? द नेक्स्ट, बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट for regional metamorphism, let's discuss an interesting information about it. Limestone is used commonly in houses, while a marble is used in construction for durability and beauty. ठीक है, तो ये इनका ताल्लुक भी मेटामॉर्फिज्म से है. Let's discuss the next topic. Marble is a metamorphic rocks formed by the alteration of limestone, a sedimentary rock. Limestone जो है, it is a sedimentary rock. Sandstone, it's a sedimentary rock and it changes into quartzite. In Pakistan, marble is found in the areas of Mulla Ghori, that is situated in Khyber Pakhtunkhwa and Balochistan. Number second is rocks formed by regional metamorphism. The internal forces of the earth. Which are the internal forces? Earthquakes and mountain building forces. What these do? It causes a rock to sink inside the earth.
इनकी वजह से कोई भी रॉक जब ज़मीन के अंदर डूब जाती है या दब जाती है, इन दिस प्रोसेस दे बिकम हार्ड एंड कम्पैक्ट ड्यू टू द प्रेशर। प्रीवियस में हमने मेटामॉर्फिज्म, थर्मल मेटामॉर्फिज्म के अंदर हमने डिस्कस किया था टेम्परेचर को, एंड इन रीजनल मेटामॉर्फिज्म pressure belongs to it. So pressure and weight of overlying rocks, this process is called regional metamorphism. Shale, a sedimentary rock, after being changed turns into slate, and slate, a metamorphic rocks, further transforms into schist. In Pakistan, slate rocks are found in areas of Abbottabad and Kund. Let's discuss some characteristics of metamorphic rocks. The rocks are formed by the alteration of pre-existing rocks. Alteration का मतलब होता है मुतबादिल, pre-existing का मतलब होता है वो rocks जो already मौजूद हैं उनके ऊपर जब प्रेशर या हीट असर करती है तो उनसे न्यू रॉक्स आर फॉर्म. सो दीज आर स्मूथ एंड शाइनी. These rocks are more hard and compact, and fossils of animals and plants are not found in these rocks. Do you know why fossils of animals and plants are not found in these rocks? क्योंकि हम इनके बात कर रहे हैं प्रेशर एंड टेम्परेचर, तो प्रेशर और टेम्परेचर के अंदर ये दोनों चीज़ें मौजूद नहीं हो सकती. सो डियर स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट दिस द टॉपिक. Let's see an assessment. In the next you will solve an assessment regarding all the questions which we have discussed in this video. These are how are metamorphic rocks formed. Metamorphic rocks are formed by the alteration of pre-existing rocks. How many types of metamorphic rocks are there? There are two types of metamorphic rocks. What are thermal metamorphic rocks? Where are thermal metamorphic rocks found? So thermal metamorphic rocks are found in Mulagori and Balochistan. Next question is, where are regional metamorphic rocks found? So regional metamorphic rocks are found in Abbottabad and Kund. Dear students, hope you understand all the lesson and assessment as well. So please do rewrite this assessment or these questions on the space which is given on your summer pack, and also learn it by heart. Thank you. Have a nice day. Allah Hafiz.